Good morning, friends. Good morning. I welcome you all on 21 Marathon Materia Medica series, lecture 14 on mammal groups, or you can say Lac Remedies. So, when we have started this series of Materia Medica, we learned lots of group in this series, and today we are learning something different kind of group, which we learn in certain different format also. So today we have with us our today's speaker, Dr. Virat Purohit. I welcome Dr. Virat on stage. Dr. Virat. So Dr. Virat is giving a different understanding of milk remedies, what we call as a Lac Remedies or mammal group. So I request Dr. Raj to give him a floral welcome for today's session. So we wish Dr. Virat best luck, and he will give you a wonderful insight into journey of a mammal group and a Lac remedy. All the best, Dr. Virat, and stage is yours. Good morning, everyone. Good morning. Today's topic is mammal group and Lac Remedies. Before we start, tribute to the founder of homeopathy, the founder of natural way of healing, Dr. Samuel Hahnemann. Again, tribute to Dr. Praful Vijaykan, the lion of predictive homeopathy. And gratitude to our mentor, Dr. Amit Gohel, sir. Thank you, sir. So let's start today's topic. Today's topic is mammal group. Mammals. The words mammals come from the Latin word mamma, which means the breast, the mammary gland. Look at this, some basic characteristic of the mammals. These are some characteristics of the mammal. As you can see, the breast, the fur, hair, and the vertebra. So the character of the mammals, vertebra, they have presence of hair, especially the class of mammals having presence of hair, or you can say fur. Presence of mammary gland in females that produce milk for the nourishment of young. Mammals are endothermal. They generate heat. They are warm-blooded. The fur or the hair helps to maintain the heat or to generate the heat. So these are the behavior of the mammals. Among all the animals, the mammals have the large brain as compared to other animals. There you can say reptiles or birds. The mammals have large brains. They are intelligent because of the large brain. So they use their intelligence in ability to learn. They have behavioral flexibility. They are flexible according to they behave according to flexibility, according to situation. They replicate and learn by imitation what their elders do. We don't have to teach everything to the mammals. They see about what happened around them. They see and they learn. So what is the social structure? So most of the mammals are living in group, herd, or you can say pack. As we are social, human are social animal, we also live in group. What group give? Group give them acceptance, feeling of acceptance. They feel safe, security. And where there is a group, there is a hierarchy, the pecking order. One is on higher, one is the bottom. So
So the hierarchy presence in the social structure, where one dominates other and one dominated by other. Each one guards his own territory. They live in group. आपने देखा होगा कुत्तों का या भेड़ियों का, वुल्फ है, उनका अपना इलाका होता है. As well as human, we have territory, countries, states, districts. They form complex society. We are the social animals. We live in society. We can see, अगर नॉर्थ में जाओगे तो पंजाबी ज़्यादा मिलेंगे आपको. साउथ में जाओगे, where साउथ इंडियन. We form the society. Now see possible human expression of mammalian group. As we see, need to belong to a group or herd and paying price of other. So what group give us? Group offers security, safety. We feel secure, we feel safe in group, in society. अपनापन लगता है. अपना समाज है, कहीं पे जाते हैं, कौन से समाज से, ये समाज से. हम पहचाने जाते हैं अपने समाज से. And group provides sense of belonging. But what we have to compromise, what we have to pay price in form of, we have to follow the rules and regulation, norms, do's and don'ts of the society. कुछ समाज के नियम होते हैं जो उनको समाज में रह के, समाज के दायरे में रह के फॉलो करने पड़ते हैं. तो ये समाज के जो रूल्स और फॉलो करने में वी लूज आवर इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी. समाज हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं. So this paying price for that. The second expression of the human in mammals group is issue of self versus group. Where there is a group, there is some things that are included, excluded, expelled, kicked out. And issue of hierarchy. Where is the group? There is always hierarchy present. Some at the bottom, some at the top. High rank, low rank, superior, inferior. One is dominating, one is dominated by. So you can see the other expression are the mother instinct. Care for the mother, care by the mother. Mother instinct. Other thing is abuse, which is physical or maybe mental, maybe social or financial. You can see abusement in society. Contemptuous or conflict between self, man versus self. So strong maternal instinct, care of mother, care by mother. One more important thing is problem related to menses and lactation. This is the most important expression of the human, of the mammals. Dr. Sankaran always ask at the end of the case taking. अगर उनको लगता है कि ये मेडिसिन लेग ग्रुप की तरफ जा रही है तो वो हमेशा पूछते हैं पेशेंट को कि मेंसिस के पहले या मेंसिस के बाद या मेंसिस के टाइम कोई तकलीफ होती है. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंसिस एंड लैक्टेशन. कॉन्फ्लिक्ट विथ वन सेल्फ, जैसे कि कहा कि हिस्ट्री ऑफ एब्यूजमेंट, मेंटल और फिजिकल एब्यूजमेंट, सेल्फ कंटेम्प्ट एंड फीलिंग ऑफ डर्टीनेस. Self-contempt and feeling of dirtiness arise from conflict with oneself. So the keywords of mammal is always जहाँ भी mammals group आएगा आपको देखने मिलेगा community, family, group, miasm and thermal. A majority of the mammals are psychotic miasm. Nearly most of the mammals are nearly psychotic miasm. Exception is Lac Leonina, lion में से जो बनती है, which is syphilitic, and many Lac patients are chilly. So अभी जो हमने डिस्कस किया हुआ था मैमल्स के बारे में, कुछ क्वालिटी और एक्सप्रेशन थे जो मैमल्स के बारे में थे. अब मिल्क के बारे में. So what is milk? Milk is a substance that's unique in mammals. तो जैसे कि आगे कहा कि मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है मैमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट, तो मिल्क जो प्रोड्यूस करता है. So there is some basic information that milk is complex mixture of some fat, some protein, some vitamins, some amino acids. These are some ingredients which compose this liquid. Milk provides easy digested food for newborn.
and help them grow until they are mature enough to digest and eat the food. जैसे कि कहा जाता है, पीडियाट्रिशियन कहते हैं कि बच्चों को 6 महीने तक तो माता का दूध ही पिलाना चाहिए, क्योंकि उनका इंटेस्टाइन इतना डेवलप नहीं होता है कि दूसरी खाने की चीज़ वो डाइजेस्ट कर सके। इसलिए 6 महीने तक कहते हैं कि माता का दूध ही पिलाए। तो जब तक उतना डेवलप नहीं होता बच्चा कि कुछ खाने की चीज़ें वो डाइजेस्ट कर सके, तो तब तक माता का दूध ही सही। Composition of milks are various according to species. जैसे गाय का दूध, ह्यूमन का दूध, जो उनके इंग्रेडिएंट्स है, मिक्सचर्स है, वो अलग अलग होंगे, लेकिन ज़्यादातर फैट और प्रोटीन, जैसे कि लैक्टेशन का पीरियड बढ़ता है तो फैट और प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है बाद में। There is some mythological relation which is prevalent in societies. Milk is symbolic relationship with the moon. Moon is white, milk is white, moon is round, and milk is produced by the breast, which cake is round. In many cultures, milk is associated with feminine. जैसे कि both moon and milk are white, and the part of the body provide milk, the breast resembles the moon. जैसे कि मून का जो पीरियड होता है, जैसे कि बोलते अमास, बाद में पूनम, डे बाय डे, ऐसे ही फीमेल के साथ कंपेयर करें तो मून रिलेटेड टू मूड, इमोशन, जैसे कि मून चेंज हो जाता है डे बाय डे, रिलेटेड टू फीलिंग, इमोशंस विच आर कॉन्स्टेंट चेंजेस. Moon also suggests cycle, which can take as associated with menstrual cycle. So let's see theme of the Lac Remedy. Themes of the Lac Remedies. Primary function of the mammal's milk is to nurture the vulnerable dependent baby. जैसे कि कहा कि बच्चा अभी कुछ डाइजेस्ट नहीं कर सकता 6 महीने तक, तब तक उनके पोषण के लिए, बच्चे को बड़ा करने के लिए, विकास के लिए मिल्क इज नेसेसरी. यहाँ तकलीफ कहाँ होती है? जब लैक्टेशन पीरियड में जहाँ कुछ गलत होता है, थिंग्स गोज रॉन्ग ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, तब ये सब तकलीफें स्टार्ट होती है. व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग हियर फॉर मदर एंड बेबी, it can lead to issue with food that can manifest throughout life and challenge onto adult life. दूसरा, lactation period क्या सजेस्ट करता है? There is a bond between mother and baby. Throughout all the themes, you can see the bond between mother and baby. Remedy pictures present all things that can go wrong in lactation period. जब lactation period में कुछ गलत होता है, बालक को, बेबी को कुछ माता का दूध नहीं मिल पाता है किसी कारण से, तो देयर इज अरेस्टेड ग्रोथ. मिल्क इज द फर्स्ट फूड दैट बेबी हैज सो. पहला खुराक जो बालक को दिया जाता है जन्म के बाद वो दूध है, लेकिन वहाँ तकलीफ होती है अगर उनको किसी कारण से दूध नहीं मिल पाता है, तो यू कैन देयर इज सम लाइक पेशेंट हैव एक्सेसिव क्रेविंग, एवर्जन, एमेनोरेशन एंड एग्रावेशन फ्रॉम इट. दिस इज द फर्स्ट फूड. अगर उसमें कुछ तकलीफ होती है, मिल्क नहीं मिल पाता है या कुछ और कोई तकलीफ, तो ये सब चेंजेस उसमें आते हैं जो रहते हैं थ्रू आउट लाइफ. जैसे कि बताया कि एक्सेसिव क्रेविंग, एवर्जन, एमिलोरेशन एंड एग्रावेशन फ्रॉम मिल्क. व्हेन बेबी डजंट गेट इनफ मिल्क, इट कैन लीड टू फीलिंग ऑफ लैक, फीलिंग ऑफ पुअर्टी एंड जेलसी. एंड ऑल्सो द चाइल्ड फीलिंग lodging of life, lodging, disgust, feeling of disgust, घिन आना. जैसे कि कचरा पूरा, कुछ गंदा पड़ा, अपने को घिन आती है, घिन आती है, ऐसे डिस्गस्ट फील होता है. क्या होता है? नोजिया. तो वहाँ से आया है कि बच्चे को दूध नहीं मिल पाता है, तो नोजिया फ्रॉम मिल्क. When bonding between mother and baby isn't fulfilled, result in feeling of separation, feeling of forsaken, and feeling of isolation, feeling of estrangement. Meanwhile, the Lac Remedy are most emotional, labile changes.
मतलब ये मालूम पड़ता है कि सारी चीज़ें लैक्टेशन पीरियड में अगर बालक और मदर का बॉन्डिंग नहीं हुआ है बराबर, जैसे कि जन्म होते ही माता की डेथ हो गई है, तो अगर किसी कारण से माता से बालक दूर हो गया है और लैक्टेशन उनको नहीं मिल पाता है बराबर, तो सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती है। फीलिंग ऑफ सेपरेशन, बालक दूर हुआ माता से तो वहाँ से आता है फीलिंग ऑफ सेपरेशन। फीलिंग ऑफ फोर्स सेकंड, गुजराती में कहते हैं तरछोड़ी दी, अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। फर्स्ट रेमेडी क्रिएटेड फ्रॉम द मिल्क इज लैक्टेन। So lectin is the first remedy which is proved. There are many other lec remedies which is proved later. One of the important theme of the lec remedies abandon and separation. ज़्यादातर lec remedy में आपको ये थीम देखने को मिलेगी. With few exception of milk usually have fear of separation from their family. Fear, उनको लगता है कि मैं अगर मेरी ड्यूटी नहीं करूँगा, मुझे फैमिली के लिए कुछ करना ही है, अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं करूँगा तो ये मुझे छोड़ दे, इसलिए फैमिली के ट्राई टू डू ऑलवेज ट्राई टू डू फॉर द फैमिली। Though they may have been truly loved by the family, the fear that they would be rejected and abandoned if they were not fulfilled their duty towards family। जैसे कि कहा कि ये मेरी ड्यूटी है, मुझे ये करना ही है, अगर मैं नहीं करूँगा तो शायद मेरी फैमिली मुझे छोड़ दे। वेरी इंपॉर्टेंस तब तक है जब तक मैं काम करूँगा, मैं फैमिली के लिए काम करूँ। जैसे कि अबेंडन के बारे में देखा, देयर इज अ सेपरेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम, सेपरेशन फ्रॉम द मदर फॉर अ शॉर्टर और लॉन्गर ड्यूरेशन और डिफिकल्ट चाइल्डहुड। सेपरेशन मदर और चाइल्ड के बारे में ले सकते हैं। सेपरेशन फ्रॉम द स्पाउस, पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ किसी कारण से एक दूसरे के दूर रहे, कोई जैसे कि फीमेल यहाँ पे काम करती है, हस्बैंड दूसरे शहर में काम करता है। सेपरेशन फ्रॉम द फ्रेंड्स, ज़्यादातर देखने को जो गवर्नमेंट जॉब होती है जो पेरेंट्स की, तो ज़्यादातर जॉब बदलनी पड़ती है, इस सिटी से वहाँ सिटी, दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होता रहता है, तो बच्चों का ग्रुप छूट जाते हैं वहाँ से, तो वहाँ भी ये देखने को मिलता है सेपरेशन फ्रॉम फ्रेंड्स। Irresolution, this is the one of the most important again expression of the lac remedy, which tends to have incredibly difficulty making decision, large or small। ये ज़्यादातर irresolute होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, दे आर कन्फ्यूज। जैसे कि बताया कि आइडेंटिटी कहाँ है सोसाइटी की, मुझे ये सोसाइटी का सुनना है, मैं क्या चाहता हूँ, ये करना है, लेकिन सोसाइटी ये चाहती है, तो दे ऑलवेज फॉलो द फैमिली डिसीजन। यू कैन से हेड बिलोंग्स टू अदर, खुद ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको चाहिए, अंदर उनको महसूस होता है कि मैं ये चाहता हूँ लेकिन सोसाइटी ये चाहती है, अगर मैं उनके अगेंस्ट गया तो शायद हो सके मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दे, अगर ग्रुपिज्म, एबेंडन, सेपरेशन, सो दे ऑलवेज फॉलो द फैमिली डिसीजन। सिमेट्री, एसिमेट्री, द स्ट्रगल बिटवीन डूइंग व्हाट द फैमिली वांट्स एंड व्हाट इंडिविजुअल वांट्स। जैसे कि बताया अभी मैंने कि फैमिली ये चाहती है, ये लोग क्या चाहते हैं, समाज चाहते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ। Milk tends to feel as though one party belong to family and other to self. So the issue to different part of sides we can see on the physical aspect. Body where symptoms often symmetrical within one area, right or left. कई बार symptom right side देखने को मिलेंगे, कई बार left side, or sometimes maybe alternative, right side, first right side and then left side. First upper part of the body, then lower part of the body. So this is the symmetrical and asymmetrical on the physical aspect. So the symptoms are constantly changing, as we can see in lac canine. One of the other is recurrent symptom. जैसे कि बताया कि milks resemble like moon. मून की साइकिल जैसे होती है, जैसे इसमें भी रिकरेंट मिलता है, सेम डे, सेम मंथ। Milk remedies tend to have cyclic symptoms that reoccur frequently, perhaps according to season, according to climate, or certain situation condition. So
So the theme of Lac Remedies entering around dependence, independence, nurturing, lack of nurturing, and feeling of suffered wrong. This is the very important to understand emotional turmoil. यहाँ बताया है कि जैसे कि हमने कहा कि बच्चे को दूध नहीं मिल पाता है. दूध क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जैसे कि अगर मदर की डेथ हो गई आफ्टर डिलीवरी, दूसरा कि मदर इज अनेबल टू फीड, अनेबल टू प्रोड्यूस मिल्क ड्यू टू एनी रीजन. Here mother history is very much important during pregnancy. As in homeopathy, हम mother history लेते हैं during pregnancy की. This is very important here. Like history of unwanted pregnancy. जैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है मेरे हस्बैंड वाइफ की, मुझे अभी बच्चा नहीं करना, अभी बच्चा नहीं चाहिए, आई एम नॉट रेडी एट द टाइम. जल्दी शादी हो गई, किसी समाज में कुछ हिस्सों में होता है कि 16 साल की उम्र पर शादी हो गई, 17, वेरी अर्ली एज, अभी आई एम नॉट रेडी टू कैरी बेबी. अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड सेक्स ऑफ चाइल्ड, कि लड़का चाहिए, समाज फैमिली बोलती है कि लड़का चाहिए, लेकिन जो माता होती है बोले कि नहीं कुछ भी चलेगा, लड़की होगी लड़का होगा चलेगा, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द फैमिली, कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी ऑफ द चाइल्ड, और एनी फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा, यू कैन से रेप हुआ, नहीं चाहती माता की बच्चा हो लेकिन रेप हुआ, प्रेग्नेंट हो गई, तो देयर इज सम इमोशनल चेंजेस. So due to any physical, mental abusement or social abusement or social trauma, as a result, mother is unable to breastfeed the child. As a result, mother is unable to feed the child. माता का मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वो फीड नहीं करा पा रही, तो फीलिंग क्या आएगी बच्चे में? जैसे कि हमने कहा 4 सेकंड फीलिंग, बच्चे में आएगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, रिएक्शन टू दिस स्टंटेड नर्चरिंग चाइल्ड, और फीड नहीं करा पा रही माता, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं बच्चे में? देयर इज सम सुसाइडल टेंडेंसीज, ईटिंग डिसऑर्डर, मे बी अंडर ईटिंग और ओवर ईटिंग, क्लीनिंग वॉशिंग कंपल्सन. क्लीनिंग वॉशिंग कंपल्सन कहाँ से है कि फीलिंग ऑफ डर्टीनेस, जैसे कि बताया कि फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट, मुझे अपने से घिन आती है, तो सो ऑलवेज ट्राई टू क्लीन, देयर इज वॉशिंग मैनिया. Feeling of indifferent, sexuality increase or decrease. Many of Lac Remedies have forgetting and mistakes in writing and speaking. There is feeling of suffered wrong. So these are the some symptoms. These are the some things you can see in the Lac Remedies. Again, there is a group. The person always want to be in the group, but due to some reason, a group or friend doesn't respond to the person, they kick out, they expel person from the group, or the individual feels that nobody loves him, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, मेरा कोई है ही नहीं, मुझे ग्रुप से निकाला गया है, तो फीलिंग ऑफ आइसोलेटेड, फीलिंग इनएडिक्वेसी एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप. तो फीलिंग ऑफ हमने देखा फीलिंग ऑफ अबेंडन, फीलिंग ऑफ सेपरेशन, देयर इज अ ग्रुपिज्म, there is a lack of confidence, low self confidence. You can see many of Lac person. Learn to get impulse under control. So there are two many strong impulses in the human. One is rage and other is sexuality. The rage, what is the rage? There is an anger which is out of proportion and violent. Due to past history, any past abusement or mental physical abusement by friend or group, family, society, due to some past experience, create strong emotional complexes in the subconscious mind. When he across the similar incidents, then the rage become very violent. अगर पास्ट में कुछ हुआ है, अब्यूज, फिजिकल और मेंटल अब्यूजमेंट हुआ है, तो उसके दिमाग में वो घुस गया है कुछ, लेकिन बार बार ये सिचुएशन आती है, तो सिचुएशन को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, then होता है sudden violence, and the violence is strong and out of proportion. Again, the second is sex. Second impulse is sex. As a human
or the mammal, we have to control the impulses, sex. What is sex? Having sex with partner not only provides physical satisfaction, but also gives feeling of warmth, feeling of security, and feeling of being accepted. But things goes wrong when here. But what if this sexuality become very strong and get out of control? सेक्सुअलिटी कंट्रोल नहीं हो पा रही है और इम्पल्सिस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, then person become amorous, lewd and lascivious. So the individual have to keep these impulses under control. But when he fails to control this situation, तो फिर इस feeling of dirty कि मैंने कुछ ये क्या है, घिन आती है खुद अपने आप से कि ये क्या कुछ गलत हुआ है. Feeling of morality low, feeling of guilt. There is a feeling of dirty. Feeling of dirty खुद से उनको घिन आती है तो वहाँ से आता है washing mania, cleanliness, washingness. There are many persons who always try to एक 2 घंटे में हाथ धोना, पैर धोना. One of the example is our Bollywood actress Sunny Leone. वो ऑलवेज उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि शूटिंग में कभी भी टाइम मिलता है 1 घंटे में भी वो अपने पैर धोने चली जाती है. मे बी ड्यू टू फीलिंग ऑफ बीइंग डर्टीनेस ड्यू टू हिज पास्ट. सो यहाँ से प्रोड्यूस होता है एंटागोनिज्म विद सेल्फ. तो जनरली फीलिंग ऑफ एंटागोनिज्म विद सेल्फ इज कॉमनली फाउंड इन मैनी लेक्स. The other thing is aversion and intolerance or desire for milk, but which is excessive. Excessive your desire, excessive aversion. Aggravation before the menses. Aggravation may be physical or mental. Many Lac remedies have tendency toward migraine headache. Many Lac remedies, Lac can, Lac death, lycinum, which is not to belong to Lac remedy. This is mammals, no sorts. But वहाँ भी देख सकते हैं migraine headache. One of the important aspect, lack of trust. बच्चा जब जन्म लेता है पहले तो होता है वूम में, वहाँ उसको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है माता पे कि वहाँ पे वो सेफ है. तो वहाँ सबसे ज़्यादा माता पे ट्रस्ट है. लेकिन जब बच्चा पैदा होता है बाहर आता है वहाँ उसको ट्रस्ट कहाँ से? जैसे कि when the holding represent support and caring, बच्चे को ऐसे उठाते हैं तो वहाँ से ट्रस्ट आता है बच्चे को. Lack of trust stemming from possible lack of bonding or warmth from the mother. When things goes here, when the holdings going wrong, तो आता है बच्चों में feeling of being let down, falling into pieces and fear of falling. One important is fear of falling. और बोरेक्स में भी देखने को मिलता है fear of falling. लेकिन यहाँ fear of falling का कारण है lack of trust. जो बच्चे को ड्यूरिंग चाइल्डहुड नहीं मिल पाता है माता से दूर रहने के कारण. तो ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट पूरी लाइफ उसको मिलता है. भी हमेशा सस्पिशियस रहता है, अपने पार्टनर के भी ट्रस्ट इश्यू रहते हैं पूरी लाइफ. तो हम आगे देखने वाले हैं लैक ग्रुप ऑफ रेमेडीज. मेनली 3 रेमेडीज, लैक कैनायन मेड अप फ्रॉम डॉग्स मिल्क, लैक फेलेनम कैट्स मिल्क एंड लैक डेफ्लोरेटम काउस स्किन. There are other many Lac remedies like Lac asinum, Lac caprinum, delphinum, equinum, humanum, leoninum, luprinum and Lac cis. But the majority used today is Lac can, Lac deaf and Lac step. So let's see Lac canine. Lac canine, dog's milk or beach milk. यहाँ आप देख सकते हो the dog which is रॉटवेलर डॉग, क्योंकि पहली मेडिसिन जो प्रूव हुई थी जो वहाँ से जो डॉग्स का मिल्क लिया गया था वो था रॉटवेलर. डॉग्स वर डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम द वुल्फ. द डॉग्स आर हाईली सोशल, हाईली डोमेस्टिकेटेड. दे आर डोमेस्टिकेटेड मगर उनके अंदर एनिमल इंस्टिंक्ट तो है ही, बिकॉज दे आर डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम द वुल्फ. They are highly social animal and completely domesticated. They are living in group.
they are symbol of faithfulness and loyalty. The most important, they are faithfulness and loyalty. कुत्तों जैसी वफादारी कहीं पे नहीं मिलती. और अगेन देयर इज अ ग्रुपिज्म, जैसे कि आपने सुना है कि इलाका कुत्तों का होता है. Wonder once again important is submissiveness and subservieness are the key words for the dog. वो हमेशा दूसरों के अधीन रहते हैं. What are the feeling of the dogs? The dogs में क्या फीलिंग है? This is my home, this is my master. He feed me, वो मुझे खाना देते हैं. उन्होंने मुझे रहने को घर दिया है. He protects me. So मुझे उनके लिए loyal रहना है. So they tried hard to please, to be liked and cared for. But the inner feeling is I am not child of my master. Means there is feeling of lesser than a master. I belong to any feeling. मैं मास्टर का चाइल्ड तो हुई नहीं. जब तक मैं काम कर रहा हूँ मुझे रखेंगे. अगर मैंने कुछ गलत किया मुझे बाहर फेंक देंगे, निकाल देंगे. ये कांस्टेंट फीलिंग रहती है डॉग्स में. A feeling of less than a master. So there is a feeling of looked down upon, feeling of smaller, feeling of inferior. I am not good enough and I am despised. So the inner feeling of the dog is I am not child of my master. So there is a arise of the something less, feeling less than a master, feeling looked down upon, feeling smaller, feeling inferior. I am not good enough and I am despised. These are the feeling arising in dogs. Dominance. जैसे कि आगे कहा कि mammals की one of the theme dominance. One dominates other and one is dominated by other. The bigger dominating the smaller, and who is going to be on top? We can see in the Lac can. Lac can person can be irritable and ferocious, but if someone is more than, they give up and submit. Here the importance is they give up and submit. जैसे कि हम जा रहे हैं रास्ते में तो कुत्ता काटने आता है, बाइट करने आता है, लेकिन हम उतर के अगर उनकी तरफ पत्थर फेंके हाथ उठाए तो वो चला जाता है. They submit, they give up. लेकिन जब वो सबमिट करते तो वहाँ से फीलिंग अराइज होती है conflict with themselves. They feeling inferior. They develop a feeling of low self. I am not good enough. I am feeling dirty and contemptuous of themselves. So कुछ rubrics है वहाँ Lac can में जो देखने को मिलते हैं. Contemptuous self of delusion, despise he is, delusion dirty he is, delusion diminish, short he is, and look down upon he or she is. The animal side is also malicious. If you fool of dog of tail, he will bite you. Animal side is malicious, moral feeling, want of rage. एक केस देखा जहाँ पे एक फीमेल थी, उनको था स्पॉन्डाइल आर्थराइटिस. तो हिस्ट्री लेने के बाद पूछा पेशेंट को कि पास हिस्ट्री ये सब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सब तकलीफ मुझे मेरे हस्बैंड और मेरे फैमिली की वजह से हुई. तो देन डॉक्टर आज क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं सुबह से उठती हूँ फैमिली के लिए, उनको खुश करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक उनको जो खाना पसंद है, चाय लेना सासू को, हस्बैंड के लिए सब तैयारी करना, उनके पसंद का खाना बनाना, ये सब ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते. तो वहाँ से फिर फीमेल को महसूस किया शायद मुझ में कुछ कमी है, फीलिंग ऑफ इंफीरियर, फीलिंग ऑफ पुअर. डॉक्टर ने पूछा कि आप जवाब क्यों नहीं दे पाते, सामने कुछ बोलते क्यों नहीं, कि उनके हस्बैंड से बात करो एक बार. क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं बात नहीं कर सकती, अगर कुछ झगड़ा हुआ तो शायद मुझे घर से भी निकाल. So the theme of dog and master we can see. Theme and symptom pattern of Lac can. Abandonment. Lac can tends to fear that their family will abandon them unless they fulfill family demand. Lac can perceive this threat to be real and its
जनरेट्स एंगिस। कॉन्स्टेंट उनके दिमाग में चलता रहता है लेग पेन पेशेंट के कि मुझे फैमिली के लिए करना है, ये नहीं करूँगी तो शायद मुझे निकाल दे। फीलिंग ऑफ डोमिनेटेड एंड सफोकेटेड बाय देम family identity. Lectin tends to feel great pride and admiration for their family and feel tremendous debt to family that must be repaid. On the other hand, these strong ties can make it difficult to differentiate oneself from the stream of the family. Lectin cut off them from their individual needs, wants and desire due to fear of abandon. मैं अपना पॉइंट नहीं रख सकती अगर उनको गलत लगा तो, अगर उनको पसंद नहीं आया तो। ये वो सोचते हैं, इसलिए अपना डिसीजन या अपनी बात वो कह नहीं पाते कि मैं क्या चाहती हूँ, व्हाट आई फील, व्हाट आई वांट। दे ऑलवेज फॉलो द फैमिली डिसीजन। इनर पैटर्न ऑफ लेक्टिन। In this pattern there is a 3A: attention, affection and appreciation, which lectin patient always want. और appreciation, attention, affection के लिए वो सब करता रहता है पूरे दिन। He tries to do for the family, लेकिन जब उसको सब नहीं मिल पाता है इतना सब करने के बाद भी, then उसके अंदर सब फीलिंग अराइज होती है। Lectin patient feels that the affection and attention she was getting previously doesn't getting now. This affects her. Then there's a feeling arise, I am nothing, I am smaller, and as I am like shit. Some rubrics are: please other desire to, mind appreciation desire, mind attention craves, mind affection desire. And what if she fails to get this? जैसे कि आपने देखा कि द मास्टर पानी में डूब रहा है, तो द डॉग विच इज़ नॉट बिलोंग टू हिज फैमिली, ना ही उनका कुछ ब्लड रिलेशन है, फिर भी वो केयर करता है मास्टर के लिए और पानी में जाता है बचाने के लिए। Dog needs love from the master, so always try to praise him. हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहेगा, ट्राई करेगा कि मास्टर खुश हो। Try to get attention.
इतना करने के बाद भी अगर मास्टर अटेंशन नहीं दे रहा है, जैसे कि देखा कि इतना कुछ करने के बावजूद हमारी मास्टर डूब रहा है, उसको बचाने गया, ट्राई टू गेट अटेंशन, लेकिन फिर भी अटेंशन नहीं मिल रही है, तो वो खुद को दोषी मानता है। जो लेग कैन पेशेंट है खुद को दोषी मानता है कि आई एम अगली, शायद मुझ में कुछ कमी है, मैं ही गंदा। What if she fails to get? Then there is a arise inferiority complex. She start feeling inferior. Hate herself. She start feeling dirty. Washes herself frequently. She start lacking in confidence, losses of life, feeling she is so worthless. She feels unimportant. So there are some rubrics. Mind delusion, imagination diminish, imagination short he sees, delusion, imagination despised, delusion dirty, delusion useless he is, and delusion worthless he is. वो खुद को दोषी मानता है सिचुएशन के लिए कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, मैं ही गंदा हूँ, मेरी वजह से ही ये हो रहा है. There are some wandering features of mental space. साइकोटिक मायाजम है और लेग कैन पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है. दे आर एब्सेंट माइंडेड, दे कैन नॉट कलेक्ट थॉट, कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. एक चीज़ चालू की, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो काम छोड़ दिया, दूसरी चीज़ फिर चालू करते हैं, फिर वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. ड्रीम्स ऑफ लेग कैन, ड्रीम्स ऑफ स्नैक्स, urinating on waking on, urinating desire for journey, had to walk long distance, dream arrived at station to see train start. There is so much anticipation, इसलिए उनको ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि ट्रेन में जा रहा है, वो ट्रेन छूट गई. Some strange symptoms and OCD and manias. Bathing and washing desire for always. जैसे कि आगे समझा है कि always there is a washing desire, there is a fastidious mania. लेकिन fastidious mania है, लेकिन उसके पीछे कारण जानना है कि inferiority complex है कि नहीं. जैसे पे inferiority complex है, उसकी वजह से fasting mania है, वो जरूरी देखें. Cleanliness mania, touch, aversion to being, aversion one body part touching other, sees faces and keep thinking. The rubrics are delusion, snacks, and around her, delusion, imagination, vision, horrible, delusion, imagination, voices, hears, delusion, air hovering like a spirit. पेशेंट सोता है तो उसको लगता है कि मैं हवा में हूँ, ऐसा फील होता है. उसको कोई चेहरा ऐसे अजीब से चेहरा दिखाई देते हैं कि वहाँ पे शायद कोई है, यहाँ पे कोई है. Lack and child, lack and child always want protection, constant protection wants of mother. There are some rubrics. Shrieking, screaming, shouting children day and night can't be pacified. दो ही मेडिसिन है उसमें, लेग कैन और कैलकेरिया. Shrieking, screaming, shouting, constant children in. Mammal, they are always absent-minded. One of the strange rubrics is absent-minded. Post a letter, goes to bring it home in her hand. लेटर डालने गया, पोस्ट जाना है, गया लेकिन बिना डाले वापस आया. मिस्टेक्स मेकिंग, टॉकिंग, वर्ड रॉन्ग. कुछ लिखता है तो भी लास्ट लेटर या लास्ट वर्ड तो गलत लिखता है. देयर इज सो मच एब्सेंट माइंडेड, सो मच थॉट, मल्टीपल थॉट एट द वन टाइम. फॉरगेटफुलनेस, पुट ऑब्जेक्ट फॉर वेयर ही इज. उसको याद नहीं रहता कि मैंने ये चीज़ कहाँ पे रखी है. Some keynotes of the leg candies, as you look in Allen's keynote, symptoms with alternating side. But the बहुत सारे मेडिसिन है जिसमें है symptom with alternating side. लेकिन लेग कैन में क्या है, symptoms alternate side में,
राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, देन बैक टू राइट साइड. मतलब जहाँ सिम्पटम स्टार्ट हुआ है दूसरी जगह जाएगा, लेकिन वापस उसी जगह वापस आएगा. गैलेक्टोरिया में भी अनमेरिड यंग गर्ल है, उसमें अगर हो रहा है गैलेक्टोरिया, तो टू ड्राइंग अप मिल्क वी कैन गिव लेग कैन. एब्सेंट माइंडेड, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन, sinking spells in every morning. These are the some keynotes of the leg camp. तो हमने देखा लेग कैन, अब देखेंगे लेग फेलिंग. Leg fellinum, made from the cat's milk. The miasm is psychotic and little bit tubercular. Exact opposite to leg can. Cat is a domestic cat, a tree-dwelling creature that lived about 10,000 years ago. And they are domesticated from about 5,000 years ago for the use of control of pests in Egypt, especially mouse catchers. They are wilder origin. She hunts at night, helped by her highly developed vision and hearing. Cats have largest eyes relative of body size among all animals. Cats are also associated with superstition and magic. In Japan, cats bring good fortune as sneezing cats in Italy. हमारे भारत में भी ज़्यादा तो सुपरस्टिशियस है कि बिल्ली जा रही है तो बिल्ली रास्ता काटा तो थोड़ी देर रुक जाना है, आगे नहीं जाना. So there is some superstitions belong to cats. Samuel Swan introduced this remedy in 1893 and again proved by Dr. Divya Chabra in 1995. So as compared to dogs have strong dependency, suppress all their rage and to be enslaved and loyalty, where the cats have strong sense of independence. Only when she desires, she goes to the master. He wants azadi. Come of their own will, loyalty is very badly missing. The dogs में जो चीज़ है वो है loyalty, लेकिन cats में loyalty is very badly missing. They can't be bullied. If master bullied, they leave the master. लेकिन का पेशेंट क्या है, बुली करोगे तो सहता जाएगा, सहता जी मेरा मास्टर है, मैंने कुछ किया, बाइट किया तो फिर मुझे निकाल देगा. लेकिन कैट्स में देखा दे कांट बी बुलिंग. अगर मास्टर ने बुली किया तो छोड़ के चली जाए, तू नहीं तो और कोई सही. So there is a selfish behavior. That's why that is to be said. Dogs have master, cats have staff. Cats are own master. My life, my rules. So let's see the theme of the leg fat. We can see strong independence here. Main conflict lies between dependency and independence. They always desire to be free, independence without any restriction. Life में कोई restriction नहीं चाहिए. Cats often dislike to be over pampered. They can only be pampered when they wish. Cat is domesticated for due to selfishness. उसको वो डोमेस्टिकेट क्यों है? क्योंकि उसको खाना चाहिए, घर चाहिए, इसलिए वो डोमेस्टिकेटेड रहेगा. उसको पैम्परिंग वो चाहेगी तभी वो मालिक के पास जाएगा. They want to manage everything on their own. They don't want control on their life. They want to be alone, calm, quiet and peaceful life. Aversion to do again anything against her will. वो जो इसकी मर्जी है वही करेगी, वही चाहेगी. So much introversion we can see in leg fell patient. Leg fell tends to need her own space and very protective her privacy. उसके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं हो रहे, फ्रेंड के साथ शेयर ज़्यादा नहीं करेगी. लेकिन कोई नया व्यक्ति आया है उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है तो वी कैन शेयर अबाउट अवर लाइक डिसलाइक कि मुझे ये पसंद है. लेकिन लेग फेल पेशेंट है वो ज़्यादा शेयर नहीं करेगा. तो ये समझता है कि वो मेरी प्राइवेट चीज़ है, मैं क्यों बताऊँ उसको. There will be so much introvert or introversion. Keep their life personal. Have a few friends.
or we can say we have a friend circle. Leg fell have a semicircle. Fear of making mistakes, fear of pointed things like needles, fear these penetrate this है. उसको ज़्यादा जो नुकीली चीज़ें होती है पॉइंटेड थिंग उसके डर लगता है, क्योंकि उससे डर लगता है कि मेरी आँख को नुकसान हो गया है. उसके पीछे का कारण क्योंकि अगर वो आँख का नुकसान होगा, कुछ आँख को चोट लगी तो फियर ऑफ बीइंग ब्लाइंड और डिपेंडेंट हो जाएगा वो, और उसको पसंद है इंडिपेंडेंट. That's why there is a fear to be blind, fear of getting attached, fear of violence, afraid they will do something violent, fear of getting attached. Leg fail पेशेंट में ज़्यादातर अटैचमेंट नहीं देखने को मिलता है, फैमिली या फ्रेंड्स, स्पाउस. दूसरा कि fear of attachment क्यों है लेग फेल के पेशेंट को? Where there is a attachment, there is a restriction. वो ज़्यादातर रिलेशन में रहना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ पे भी मुझे रिस्ट्रिक्शन आ सकता है. तो ऑलवेज ओपन रिलेशनशिप, जैसे कि आज तक ट्रेंड चल रहा है लिविंग रिलेशनशिप. सेक्सुअलिटी एंड रिलेशनशिप, एवर्जन ऑन समवन एल्स टर्म, डिजायर इफ इट ऑन देयर टर्म, ट्राई टू अवॉइड रिलेशनशिप और रिलेशनशिप ऑन अ सरफेस because of previous suppers. आगे लाइफ में हिस्ट्री में कुछ हुआ होता है उनके साथ, इसलिए ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करती है. तो there is only surface relationship. जैसे कि गुजराती में कहावत है कि दूधનું દાજ્યું છાશ પણ ફૂકી ફૂકીને પીવે. So there is some past event in relationship, so they avoid to be in relation. They are not emotionally involved. They can be playboy or playgirl. They have an open sexual life. They avoid stable relationship. तो यहाँ पे भी है कि इंडिपेंडेंस, सेक्सुअल और रिलेशन में भी इंडिपेंडेंस रहना है उसको. Dreams full of animals, often very close to them, wild, aggressive and destructive. जैसे कि कहा कि मायासम में साइकोटिक लिटिल बिट ट्यूबरकुलर मायासम के वांटिंग टू ट्रैवल, वांट टू लीव होम, टू एस्केप फ्रॉम दोस हु वांट्स टू ट्रैप हर. There is one of the theme of prostitute. Prostitute is who submit her body and degrade herself in order to earn money for the survival. तो जैसे बताया कि वो डोमेस्टिकेटेड है, लेकिन क्यों है कि उसके सर्वाइवल के लिए, for the monetary gain. It's a feeling of cheaping oneself in order to gain something that creates a dirty feeling about. So there is some dirty feeling also in leg failure patient. So there are some keywords of the leg fail: dignity, independence, degrade, power, agility, clairvoyance, and appear aloof. So now leg deaf, skimmed cow milk. So the vacca is the Latin word for the cow, and deflorate means separate out or reduce the fat content. Leg deflorate यानी skimmed milk. Cow was domesticated around 500 BC. It was used for meat, milk as well as for carrying heavy load. Dairy or milk cows are bred for their ability to produce large quantity of milk. Typically domestic cow live about 20 years. Cow affiliated with goddess, symbolizing the feminine fertility goddess. कहा जाता है कि गाय में 33,000 करोड़ देवी देवता का वास होता है. The cow serves as a symbol of perfect mother, passionately devoted to her calf. Leg deaf introduced in homeopathy by Samuel Swan in 1879. So the core theme of leg deaf is separation from the family, separation
separate from the family and have to manage life alone. Their feeling is they have to do a lot for the community. मुझे community के लिए बहुत कुछ करना है in order to be accepted by the community. Also they feel that they have to bear silently with a lot of suffering, beating, abuse, extramarital relationship of husband and continue to their work in order to be accepted. There is anger about authority. लाइक डेफ का पेशेंट की पूरी लाइफ सहन करता ही रहता है कि मुझे सहन करना ही है. जैसे कि हम गाय को देखते हैं रास्ते में, जो उसका मालिक होता है उसको पीटता है, लेकिन गाय कभी मुड़ के जवाब नहीं देती. मुझे लाइफ पूरी लाइफ ये सहन करना ही है. देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग, बीटिंग, अब्यूजमेंट, थीम ऑफ लूजिंग ऑफ नियर वंस, स्पेशली मदर, थीम ऑफ adopted children who have been separated from their mother earlier and feeling forsaken. Fear of closed spaces, there is also suicidal tendency, desire to serve and serve, feeling of accused wrongly and adoption, feeling of there is always desire to serve and serve. Lac Remedies के पेशेंट में abusement से ज़्यादा wrong accused की फीलिंग ज़्यादा होती है. You can see the person is Hindu type. Feeling of adoption. एक पेशेंट था, उसको फॉर द सोरियासिस. उसने एक ड्रीम बताया कि ड्रीम में मुझे सपने में आया कि मैं पेट लेने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं. आई हैव टू बाय अ डॉग. वहाँ पे एक डॉग पड़ा हुआ था कोने में. तो उसने बोला ये डॉग, तो जो ओनर था उसने बोला कि ये तो हैंडीकेप डॉग है. तो उसने बोला कि नहीं, मुझे यही चाहिए. देयर इज अ फीलिंग ऑफ एडॉप्शन, देयर इज द मदर इंस्टिंक्ट, देयर इज अ सिंपैथी. So the feeling of being persecuted, feeling tortured, feeling beaten, sense of feeling of abandoned and neglected, feeling and sense of mother for those who are neglected and abandoned. In one of the case, the patient having eczema. उसको हिस्ट्री में पास हिस्ट्री उसकी ऐसी थी, एक्जिमा कब से चालू हुआ. तो उन्होंने बताया कि मैं पेशे से गांव में पुजारी हूँ और पूरा गांव मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देता था. मैंने भी गांव के लिए बहुत कुछ किया. लेकिन एक बार क्या, मंदिर में चोरी हुई. चोरी होने के बाद सारे गांव वालों ने मेरे पे आरोप लगाया. तो उन्होंने लगा कि मुझे फीलिंग हुई कि मैंने बचपन से बहुत सालों से गांव के लिए इतना कुछ किया. जैसे बैल होता है, खेत में उसको जोतते हैं बैल को. मैंने इतना हरा भरा खेत, मतलब गांव के लिए इतना कुछ किया पूरी ज़िंदगी. लेकिन उन्होंने बाद में मेरे पे आरोप लगाया. तो देयर इज अ रॉन्ग फीलिंग ऑफ रॉन्ग एक्यूज. You can also see feeling of use in lac Remedies patient. जैसे कि गाय है, गाय का दूध है उसके अपने बछड़े के लिए, लेकिन उसका उपयोग हम करते हैं. फीलिंग ऑफ बीइंग यूज्ड, फीलिंग ऑफ नेग्लेक्टेड. So there are some pattern in lac death. Need to belong to community, fear of rejected by community, feeling of being forsaken by community, tremendous sense of injustice, fear of lots of suffering, cared for and by the mother, fear and dreams of being pursued, of beaten, being not cared by person who should be caring. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सिंधु टाइप फोटा, अभी जो फोटो देखा हमने, दे अडॉप्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्फन चाइल्ड. एक केस में भी एक फीमेल पेशेंट थी. उन्होंने कहा कि मेरे खुद के बच्चे नहीं है, लेकिन मेरे जो रिलेटिव है
जो अनाथ बच्चे थे उनके माता गुजरने के बाद मैंने ही उनको पाला, मैंने उनको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। लेकिन आज जब मुझे तकलीफ हो रही है तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। The feeling of forsaken by the family or the community. So sphere of action, there is a nutritional deficient, faulty nutrition in lack depth, anemic condition, global hysterical, sensation of there is something in the lump in the throat, car sickness, exhausted and suffering from loss of sleep. Lack depth also we can see the constipation, chronic constipation. The person who is taking enema for the many years, पेशेंट बोलता है कि 3-4 दिन कभी हफ्ते हो जाते हैं, स्टूल पास नहीं हो रहा है, इनेमा लेना ही पड़ता है. So we can see about we can give lack depth. So some PQRS symptom of the lack depth: strong desire, aversion, intolerance of milk, affection of the breast, poor lactation. जहाँ poor lactation होता है वहाँ पे हम lack depth दे सकते हैं. One of the medicine I have seen is yohimbinum. During internship one of the female कि 1 महीना हो गया है लेकिन मुझे बराबर दूध नहीं आ रहा. This is the therapeutic aspect. हमारे जो टीचर थे उन्होंने दी थी yohimbinum. कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग, डॉक्टर हैरिंग ने कहा है कि लेक डेफ देने के बाद 2 घंटे से 24 घंटे में यू कैन स्टार्ट प्रोड्यूस मिल्क. देयर इज सम मोशन एग्रावेट, रेस्ट एमिलियोरेट हिज चिली, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अमेरिकन सिक हेडेक. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट part of the leg death is American sick headache, typical migraine where the pain starts from the forehead and goes radiating to occiput region. With headache there is a vomiting, nausea, pressure and bandage ameliorate. These are typical migraine syndrome you can see in American sick headache. Loss of sleep. There are some dreams in leg death, snakes, animal, being pursued, being beaten with sticks, being separated from the friends and family. Now see lysine. This is a nosor. A lysine saliva of rabbit, also known as hydrophobinum. This nosor is prepared from the saliva of rabbit dog. A sphere of action on the nervous system, especially throat, sexual organ and aching bones. So lysinum patient कैसा होता है? Lysinum patient who is very sympathetic toward animal. जो सोरिक स्टेज में होता है तब उसको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है lysinum patient को. What is the state of lysine? It is a state of control animal gone crazy. The dog that obeyed the master but was treated so badly that it lost its all control and jumped on its own master and tore. So the main feeling of the lysine is suffered wrong, being tormented, especially by whom he has served has been. उसको फीलिंग आती है कि मैंने मालिक के लिए इतना किया लेकिन फिर भी मालिक उसको बुली करता है, टॉर्चर करता है, टॉर्मेंट करता है. फिर यहाँ पे लाइसिनम को फीलिंग आती है suffered wrong or being tormented. Thus the arise intense feeling of anger and rage in which person can bite, strike and even violent and mutilate. Often this rage is followed by quick repentance, or it may be an important anger which can lead to an impulse to stab himself. One of the important is quick repentance. तुरंत ऐसा हमला करने के बाद या काटने के बाद उसको तुरंत पछतावा होता है, ऐसा नहीं कि बाद में तुरंत. देयर इज वन ऑफ केस जहाँ पे पेशेंट को क्रॉनिक साइनसाइटिस की कंप्लेंट थी. पेशेंट को हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि उसको जब गुस्सा आता है तो अपने भाई को काटता है, अपने भाई को नाखून काटता है, मुंह से काटता है.
लेकिन उसके बाद तुरंत सॉरी भी बोलता है, उसको पछतावा होता है कि सॉरी सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत किया, उसको फीलिंग होती है कि मैंने गलत किया. तो इट क्विक रिपेंटेंस. If you take history of mother during pregnancy, she had intense feeling of wrong suffering by in-laws. Feeling I had done so much for them and then my times I am pregnant, nobody by myself. मैंने इतने सालों तक इतना किया मेरे परिवार, लेकिन अब मुझे ज़रूरत है तब मेरे पास कोई नहीं. So she produced a child Lycinum who sometimes gets such a rage that actually scratch badly. There is many phobia in Lycinum. Lysophobia, fear of being mad. Also there is aerophobia, fear of air. Agoraphobia, fear of going in crowd in public. Or the singer, rapper, Honey Singh. अभी पिछले कुछ साल पहले उसको भी फोबिया था, एगोराफोबिया, पब्लिक में जाने से डरता था. There is wandering desire, heedless, careless. So much careless होता है कि जैसे छोटा बच्चा है, उसको बालकनी में जाके 10वें 12वें माले से बालकनी में जाके बच्चे को ऐसे उछालेगा कैसे, उसको थोड़ा भी डर नहीं है. So heedless, careless, hopeless, despair, sadness. क्योंकि हमने देखा एरोफोबिया, सो मच इरिटेबल. Hydrophobia, desire to drink but he can't. Vomited out, gagging. पानी पीना चाहता है लेकिन पी नहीं पाता है ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन स्पाज्म ऑफ द इसोफेगल एंड रेस्पिरेटरी मसल. तो देखा कि गैगिंग ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया, वोमिटेड आउट. Look at the saliva. Viscid, stringy, ropey. Lysinum patient is always spitting क्योंकि वो swallow नहीं कर पाता है, क्योंकि जैसे कि बताया कि इसोफेगस में स्पाज्म होता है, constriction feeling, so he can't swallow, must vomited and gagging. How much is the intensity of fear from the water? This is a rabbit dog. Furious. So much irritable, anger, restlessness. Aggression, desire to bite, desire to kill, desire to stab.
जैसे कि देखा ये स्टेज था मेनिया का. In the storage stage, the licensed patient likes to ट्रैवल, फिरना, घूमना उसको बहुत अच्छा लगता है. ऐसे हम पेशेंट को बोलोगे कि चलो बाहर जाना है घूमने, तुरंत रेडी हो जाएगा. लेकिन ये मेनिया कब स्टार्ट होता है? जब उसको फीलिंग होती है कि फीलिंग टॉर्मेंटेड, एक्यूज रॉन्ग, सफर्ड रॉन्ग, मैंने इतना कुछ किया है लेकिन उसके बाद भी मुझे मिला क्या. एंटीसिपेटरी एंजाइटी, जैसे कि नक्सोमिका का जैसे मालिक है और मजदूर है वहाँ पे लाइसिन, तो कुछ भी काम करेगा तुरंत डांटेगा, ये क्या किया, ये क्या किया, गलत किया तूने. वापस मजदूर ने काम किया वापस डांटेगा. कंटिन्यू ऐसी सिचुएशन आएगी तो वहाँ बाद में देयर इज अराइज ऑफ एंटीसिपेटरी एंजाइटी, एंटीसिपेटरी फियर. कुछ भी करने से पहले वो डरेगा. फिर जैसे एगोराफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इंसेन एंगर. जो सिंपैथेटिक था पर्सन जो स्टोरिक स्टेज में, वो वहाँ से जाएगा क्रूएलिटी. तो देयर इज सम रुब्रिक. एंगर अल्टरनेटिंग विथ क्विक रिपेंटेंस, अटैक्स other desire to bite desire, cut desire, people stab his flesh with knife, kill desire, delusion, abused being, delusion, tormented he is, delusion, wrong suffer. There is always fear of dog, sensitive, oversensitive. The licensed patient is very hypersensitive toward all five senses. एवर्सन टू वाटर, जैसे कि बहता पानी देख लिया तो उससे बहुत डर लगेगा. पानी देखने के बाद वहाँ उसको आएगी डिजायर फॉर यूरिनेट. There is some modality. Aggravation from all external stimuli, from sight and sound of the water or pouring water, heat of sun, dazzling light, bad news, thinking of food. कि जो सारे एक्सटर्नल जो स्टिमुला है उससे उसको डर लगेगा. सो मच हाइपर सेंसिटिव ही इज. माउथ, कांस्टेंट स्पीटिंग डिजायर, सलाइवा, टफ, सोर थ्रोट, कांस्टेंट डिजायर टू स्वेलो व्हिच इज डिफिकल्ट, एंड गैगिंग व्हेन स्वेलो वाटर, spasmodic constriction in throat. One other important aspect is sexuality of the lysinum patient is so much lascivious, priapism with frequent emission. So much lascivious patient, always there is a desire to sex, but he want to perform but he can't. क्योंकि उसके ग्लैंड्स पेनिस inflamed है, so much soreness of the glands penis, so there is so much excessive sexual desire but he can't perform due to inflammation, soreness of the glands penis, painful erection. So here aggravation during and after coition. Abnormal sexual desire. Same in females, so much sexual desire, but vagina is so much sensitive like platinum. So coition is painful. After vagina, erosion vagina. Here also aggravation during and after coition. So he want to perform excessive sexuality inner side. He want to perform but he can't due to pain. So there is a hyper insensitivity, sensitive vagina, sexual desire. You can see hyper in those aspects. As with every person, lysine likes to enjoy the world. लाइसिन पेशेंट भी सब एंजॉय करना चाहते हैं, उसको सब अच्छा लगता है बाहर घूमना, बट ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ही कांट. पेशेंट गेट एग्रावेशन फ्रॉम द ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, एग्रावेशन फ्रॉम द डेजर्ट, लाइट, ऑयल, फ्लावर, सीइंग द वाटर कास्केड एंड फाउंटेन. इन सारी चीज़ों से उसको एग्रावेशन होता है. वो घूमना चाहता है लेकिन इस चीज़ों से वो घूम नहीं पाता है, तो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेता है. सेल्फ सेंटर, selfishness. He likes to enjoy but he can't, so he shuts himself from the external environment, family, society. He becomes self-centered. ऐसे देखा कि स्टोरिक स्टेज उसको सब घूमना पसंद है लेकिन ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी वो घूम नहीं पाता है. Then arise
psychotic, selfishness, self-centered, jealous from the people who are healthy and enjoying the world. Then he develops strange ideas and become hyper insulting, then goes in syphilitic state. तो तीनों स्टेज देखने को मिलता है, सोरिक, साइकोसिक and then syphilitic. In syphilitic state there is hyper impulsive. So there is a violence of lysine, physical violence, desire to kill other or himself, desire to cut, stab, sexual violence, sexual assault, rapes, sadism. You want to enjoy all the aspect of sex. जैसे कि BDSM सुना होगा आपने. There is emotional aspect, abusive, curse and swear. एक फिल्म देखिए आपने 50 Shades of Grey. You can see sexual aspect. Okay, thank you. That's all from my side. So it was an amazing journey of understanding of a different group of remedy, Lac Remedy. So a good round of applause for the today's wonderful session on milk remedies. And as a part of gratitude, I am sharing my gratitude to today's speaker, Dr. Virat Purohit, for sharing wonderful insight on the group of Lac Remedy. Thank you so much, and thank you all for this greatest sessions.